हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रिलीजियस अनरेस्ट के बारे में, राइट? वी डिस्कस्ड अबाउट रिलीजियस अनरेस्ट इन आवर प्रीवियस क्लासेस. सो एज अ रिजल्ट ऑफ those religious unrests, we can see the emergence of two important religions. Those were Buddhism and Jainism. दो important religions का जन्म हुआ था वो रिलीजियस अनरेस्ट के वजह से, जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। वो हम हमारे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद बुद्धिज़्म। ओके, हम लोग शुरू करेंगे बुद्धिज़्म से। विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट बुद्धिज़्म। सी द टॉपिक ऑफ बुद्धिज़्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। आपके प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, ओके, फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, the topic of Buddhism, it is very important. Okay, and if you study this topic rigorously and comprehensively, this topic you can use it in your other examination also. अगर आपको एसएससी एग्जामिनेशन देना है, आरआरबी के एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो उसमें भी बुद्धिज़्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So that is the reason why this topic it is very important. इफ इन योर एंशियंट इंडिया का जो भी सिलेबस है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज़्म. और ये जो बुद्धिज़्म का टॉपिक है, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन 3 डिफरेंट पार्ट्स. ओके, हम लोग 3 अलग अलग वीडियोस बनाएंगे बुद्धिज़्म के ऊपर. एक रहेगा जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स. ओके, we'll discuss about that in today's video. In our next video we will discuss about the different sects in which Buddhism has been divided. बुद्धिज़्म के डिफरेंट सेक्ट्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या फिलॉसफी थी उसके बिहाइंड वो भी पढ़ेंगे. ओके, व्हाट वर द रीजंस फॉर दोज डिविजन एंड द फिलॉसफी बिहाइंड ईच एंड एवरी सेक्ट विल डिस्कस. देन वी विल डिस्कस अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर. बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट इज द रीजन व्हाई विल डिस्कस द बुद्धिस्ट लिटरेचर in a separate video. In that video only we'll discuss about the rise of Buddhism and downfall of Buddhism and even spread of Buddhism. Okay, ये है हमारा लेसन प्लान बोल सकते हैं हम लोग बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो बुद्धिज़्म, so as we have discussed in our previous topic that the religious unrest which happened during 6th century BC gave rise to the emergence of 2 important religions, and one of them was Buddhism. And the founder of Buddhism, his name is Gautam Buddha. Okay, Gautam Buddha, he is considered as a founder of Buddhism. And he was born in the year 567 BC. Okay, he was born in the year 567 BC. His name was Gautam Buddha, but his real name was Siddhartha. His real name was Siddhartha, and he belonged to Sakya clan. Okay, he belonged to the Sakya clan. He belonged to the Sakya clan. That is the reason why Siddhartha, he was also known as Sakya Muni. Okay, Siddhartha or Gautam Buddha, he was also known as Sakya Muni. His father's name was Suddhodana and his mother's name was Maya Devi. Right after his birth, okay, 5 to 6 days after his birth, his mother died. So that's the reason why he was brought up. Okay, because of that, he was brought up by his aunt Prajapati Gautami. Okay, Prajapati Gautami ने गौतम बुद्धा को पाल पोस के बड़ा किया. ओके, और उन्हीं के नाम, गौतमी के नाम से ही सिद्धार्था का नाम गौतमा पड़ा. ओके, उन्होंने प्रजापति गौतमी के नाम से ही गौतमा नाम अडॉप्ट किया है. ओके, so this was about, so when Buddha was born, during his naming ceremony, his father called many Jyotish rishis and munis to attend his ceremony. And the Jyotish, the astrologers who came to attend his ceremony, they predicted that he will become either a great king or a sannyasi. मतलब ज्योतिष जो भी गौतम बुद्धा की नेमिंग सेरेमनी अटेंड करने आए थे, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि आइदर ये बहुत बड़े चक्रवर्ती बनेंगे, नहीं तो एक सन्यासी बनेंगे. ओके, सो ये प्रेडिक्ट करने के बाद सुद्धोधना, उनके जो पिता थे, सिद्धार्था के पिता जो सुद्धोधना थे, वो बहुत ही मतलब डरे हुए थे. मतलब see, every king wants his son to become a king, right?
So in the same way, Suddhodana also wanted his son Siddhartha to take forward his legacy and become the next ruler. But he was afraid that okay, whether the prophecy of those astrologers will become true. Okay, आगे जाके वो जो प्रिडिक्ट किया था एस्ट्रोलॉजर्स ने वो सच ना हो जाए, इसीलिए सुद्धोधना ने सिद्धार्था को एक बहुत ही क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पाल पोस के बड़ा किया. ओके, ही वॉज ब्रॉट अप inside the palace. He was never allowed to go outside. He was kept outside. He was kept out of the reality which was present in the world. Reality से बहुत दूर रखा गया उनको, और जो भी सुख सुविधाएं हैं, all the facilities were provided to Siddhartha, and he was made to live inside the palace. Okay, and he was even married. He got married at the age of 16 years, and his wife name was Yashodhara, and they had a son named Rahula. See, these names are very important. They usually ask in the prelims examination about these areas. Okay, so that is the reason why you have to remember these names. This Sakya Muni, इसके बारे में पूछा जाता है. Sakya Muni, then the son of Siddhartha, wife of Siddhartha. ये directly नहीं पूछेंगे, आपको statements में पूछे जा सकते हैं. Okay, so that is the reason why please concentrate on these names. Okay. सो देन 16 साल में उनकी शादी करा दी गई. शादी करने के बाद उनका एक छोटा बच्चा था राहुला. सो एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, ओके, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स सिद्धार्था ही वांटेड टू टेक अ स्मॉल टूर ऑफ द किंगडम. ओके, उनका जो किंगडम था उसका एक सैर करना चाहते थे. तो उनके साथ उनके फादर के सबॉर्डिनेट जो थे चन्ना, ओके, चन्ना असिस्टेड सिद्धार्था इन हिज टूर. और सिद्धार्था वो अपने घोड़े के साथ गए थे जिसका नाम था कंठका. ओके, ऑन द हॉर्स कंठका सिद्धार्था along with his father's subordinate Channa, he went to take a small tour of his kingdom. So while they were taking the tour, okay, while they were on their tour, they saw 4 important things. Okay, उन्होंने अलग अलग 4 दृश्य देखे, और वो 4 दृश्य को ही the 4 great signs कहा जाता है. Okay, so these 4 great signs, they are very important. Okay, they are very important in Buddhism, because Siddhartha, when he went out for a tour, he saw these 4 great signs. What were these 4 great signs? One was an old man. He saw an old man, and seeing old man, he realized that aging is universal. Okay, everyone should age, and it is unavoidable. Okay, बुढ़ापे को कोई टाल नहीं सकता. हर एक इंसान जो अब जवान है आगे जाके वो बूढ़ा होगा. ओके, नो वन कैन अवॉइड इट इवन इफ यू आर अ किंग. देन द सेकेंड साइट वॉज अ सिक मैन. ओके, एक बीमार इंसान को देखते हैं. ओके, सो एक बीमार इंसान को देख के सिद्धार्थ ने ये रियलाइज किया कि सिकनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, बीमारी होना और या बीमार होना, ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, यू कांट अवॉइड सिकनेस. यू कांट से दैट ओके मैं राजा हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकता. ऐसा कुछ नहीं है. एवरीवन शुड गो थ्रू द सफरिंग ऑफ सिकनेस. देन द थर्ड थिंग विच ही सॉ वॉज अ कॉर्प्स. ओके, अ डेड बॉडी विच वॉज बीइंग टेकन टू क्रीमेशन. ओके, एक डेड बॉडी को जलाने के लिए लेके जा रहे थे, अंतिम संस्कार किए जा रहे थे एक डेड बॉडी के. वो देख के सिद्धार्था ने ये रियलाइज किया कि ऑल लिविंग बीइंग्स मस्ट फेस डेथ. ओके, मृत्यु ही जिंदगी का सत्य है, वो रियलाइज किया था सिद्धार्था ने. देन द 4th साइट वॉज अ होली मैन. सो सिद्धार्था व्हेन ही सॉ अ होली मैन, ही सॉ अ काइंड ऑफ ब्लिस एंड पीसफुलनेस ऑन हिज फेस. ओके, दिस मैन ही वॉज वेरी हैप्पी. तब उन्होंने चन्ना को पूछा, चन्ना ये कौन है जो कि इतना खुश दिखाई दे रहा है, क्या रीज़न है इनके खुशी के पीछे. तो चन्ना ने सिद्धार्था को बताया कि सिद्धार्था ही हैज़ रिनाउंस्ड एवरीथिंग. ओके, उन्होंने जो भी दुनिया के चीज़ें हैं उन्होंने सबको त्याग करके वो एक सन्यासी बन गए हैं. एंड ही यूजुअली रोम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और ये सब चीज़ों को उन्होंने त्याग दिया है. ही हैज़ सैक्रिफाइस्ड और ही हैज़ रिनाउंस्ड द वर्ल्डली प्लेजर्स. संसार के जो भी सुख सुविधाएं हैं उसे इन्होंने त्याग के एक सन्यासी का जीवन अपनाया है.
ये चन्ना ने सिद्धार्था को बनाया. एंड सिद्धार्था, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, लाइक दीज थिंग्स they left an impression on his mind. He went back to the palace and he started thinking about it. So when he was thinking about it, he came to a conclusion that even I should follow the path of sannyasi. Okay, तो वो बहुत ही इंस्पायर हो गए थे इस सन्यासी के जीवन से, और ये सन्यासी जो बहुत खुश है, उन्हें देख के ये बहुत ही इंस्पायर होके he wanted to renounce the world. So at the age of 29 years, Siddhartha, he renounced the world. He left his family, he left all the worldly pleasures, he left his palace, his father, his wife and his son. सबको छोड़ के वो जंगल में चले गए. And he roamed for 7 years. वो बहुत जगह घूमे. He went to different munis, rishis, and he gained knowledge because he wanted to search the path of what do you call निर्वाण कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग. ये जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स है उससे मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, उसका मार्ग क्या है, उससे खोजने में उन्हें 7 साल लग गए. ओके, in the search of that path he went to different rishis, munis. Okay, he went to different rishis and munis, and at the end he realized that through meditation, through rigorous meditation, he can attain nirvana. And that's the reason why he rigorously practiced meditation for 49 years at Bodh Gaya. He went to Bodh Gaya and along the banks of the river Niranjana, in Bihar, at Bodh Gaya, under people tree. Okay, under people tree, he sat under people tree and he performed for meditation. He did meditation rigorously for 49 days, and at the end of the 49th day he received enlightenment. Okay, he got enlightened after doing meditation for 49 days, and after getting enlightened, Siddhartha was called as Buddha. Okay, Buddha means an enlightened soul. Okay, Buddha means enlightened soul. After getting enlightened, he was called Buddha, and the tree, the people tree, it came to be known as Bodhi tree. Okay, because under this tree only the Buddha got enlightened. Okay, Buddha got enlightened under this tree. So that is the reason why the people tree at Bodh Gaya, it is known as Bodhi tree. And Buddha, after getting enlightened, he came to be Siddhartha. After getting enlightened, he came to be known as Buddha. So after getting enlightened, he started preaching. Okay, he started spreading his message. Enlightenment मिलने के बाद उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो लोगों को बताना चाहते थे, और उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया. He started giving sermons. Sermons means religious teachings. And he gave his first sermon at Sarnath. सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट रिलीजियस टीचिंग दिया. और इस इवेंट द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, दैट पर्टिकुलर इवेंट, इट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन. ओके, इट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन. So see, he got enlightened at the age of 35 years and Buddha died at the age of 80 years. Okay, so he preached for 45 years. Okay, for 45 years Buddha preached, like he used to move from one place to another place and he used to spread his message. So in these 45 years he even founded a sangha. Okay, he founded a sangha which helped Buddha to spread his message. Okay, संघ के जो लोग थे वो बुद्धा की मदद करते थे ये मैसेज को हर एक इंसान तक पहुंचाने में. ओके, सो एट द एज ऑफ 80 years बुद्धा डाइड एट कुशीनगर. He died at Kushinagar, and this event of the death of Buddha, it is known as Mahaparinirvana. See, I'll give you a list of important events. Okay, see, this list is very important. Okay,
So there are 5 important events in the life of Buddha. Okay, there are 5 important events in the life of Buddha, and each event it is represented through a symbol. Okay, and each event it is represented through symbol. So you have to like remember all these events and the like what is its significance and even the symbol with which those events are represented. Okay, so the first event is the birth of Buddha. The birth of Buddha, it is represented through lotus. Okay, then we have the day Buddha renounced this world. When Buddha renounced his world, that particular day it is represented through horse. Okay, this event it is represented through horse, and it is known as Mahabhinishkramana. Mahabhinishkramana. Then the day Buddha attained enlightenment, the event. So the event of enlightenment, it is represented through Bodhi tree, and this event it is known as Nirvana. Okay, Nirvana means salvation. Then we have the first sermon, the event of first sermon which happened at Sarnath. It is represented through 8-spoked wheel. 8-spoked wheel, and this event is known as Dharma Chakra Parivartana. Dharma Chakra Parivartan. Okay. Then we have the last event. What was the death of Buddha? The death of Buddha, it is represented through a stupa, and the event it is known as Mahan Parinirvana. Okay, you got it? Did you get it? See, these are important, or these are 5 important events in the life of Buddha. The birth of Buddha, it is represented through a symbol of lotus. Okay, on the Buddhist sculpture, in the Buddhist sculpture, you find, if you find lotus, it shows that okay, in the sculpture they are trying to tell about the birth of Buddha. जब भी आप बुद्धिस्ट स्कल्पचर और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर ये सिंबल्स देखेंगे, तब आपको ये समझना चाहिए कि वो पर्टिकुलर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में वो लोग ये इवेंट के बारे में बता रहे हैं. ओके, सो इन द बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द बर्थ ऑफ बुद्धा, इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू लोटस, एंड द इवेंट व्हेन ही रिनाउंस्ड हिज kingdom, when he renounced his kingdom, it is represented through horse, and that event it is known as Mahabhinishkramana. Okay, then we have the event of enlightenment, the event when Buddha attained salvation, that is represented through a Bodhi tree, and the event it is known as Nirvana. Okay, first sermon, the first religious teaching was given by Buddha at Sarnath, and that event it is represented through 8-spoked wheel. Okay, it is like this, 8-spoked wheel, and that event it is known as Dharma Chakra Parivartana. Then the event of death, Buddha died at the age of 80 years at Kusinagar, and that event it is represented through a symbol of stupa. Stupa looks like this. Okay, usually the stupa is like this, and we even have like this. We even have stupas which look like this. Okay, basically it has a dome, and this stupa and this event it is known as Mahaparinirvana. These events are very important, so please try to remember these things. Okay, note it down when you are listening to this video. Okay, so then after that, now we discuss about the teachings of Buddha. What were the important teachings of Buddha? So when it came to important teachings of Buddha, one thing we have to remember that Buddha did not declare himself as God. बुद्धा ने अपने आप को कभी भी भगवान नहीं बोला है. Okay, in all the Buddhist writings,
which were given by Buddha, in all the Buddhist teachings given by Buddha, Buddha never claimed himself to be a god. Okay, and apart from that, he even did not speak about metaphysical things like soul, आत्मा, मतलब आत्मा, सोल के बारे में या गॉड के बारे में कभी भी वो बात नहीं करते थे. ही यूजुअली ट्राइड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे, ओके, इस जीवन में लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे उसे सॉल्व करने का ही उनका एक मकसद था. ओके, एंड हिज मेजर एजेंडा वाज हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ. ओके, जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं, मतलब क्या करने से खुशी मिलेगी एक इंसान को, वो क्या करना चाहिए, उसी की खोज में उन्होंने अपने टीचिंग्स दिए हैं. ओके, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? सो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इंक्लूड द 4 great truths. Okay, 4 great truths, that is they are known as Arya Satyas. Okay, the 4 truths they are known as Arya Satyas. इसे आर्य सत्यास कहा जाता है, जो कि बुद्धा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है. तो इस टीचिंग्स में ये आर्य सत्यास में बुद्धा क्या कहना चाहते हैं वो हम लोग समझेंगे. तो बुद्धा सेज दैट दुखा, फर्स्ट टीचिंग वाज दुखा. दुखा मीन्स द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. तो बुद्धा इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहते हैं कि दुखा, हर जगह दुख है दुनिया में हर जगह दुख है. तो बुद्धा इसे ये कहना चाहते हैं कि एवरी पर्सन इज अनहैप्पी. ओके, नो वन इज हैप्पी, एवरी पर्सन इज अनहैप्पी, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. ओके, देन samudaya. Samudaya means suffering is caused by the craving, desire and attachment. So फर्स्ट पॉइंट में ये क्या कहते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. सेकेंड पॉइंट में ये कहते हैं कि द रीजन फॉर दैट सफरिंग और द रीजन फॉर दैट सॉरो इज योर डिजायर्स. ओके, your desires are the reasons for your sorrow and for your suffering. Your desires are the reason. तो इसमें आप लोगों को एक डाउट आ सकता है कि मैडम क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान नाखुश है? बुद्धा ये नहीं कहते कि हर एक इंसान नाखुश है. ये कहना चाहते हैं कि अगर एक इंसान को वो जो चाहता है वो नहीं मिला तब वो नाखुश रहेगा. मतलब क्या, इफ अ पर्सन, इट सेज दैट इफ अ पर्सन does not get what he wants or if he not gets what he desires, then he will suffer, he will be unhappy, he goes through sorrow. So basically the reason for all the sufferings in the world, the reason for all the sorrow which is present in the world, it is desire. Okay, you can overcome this desire. Okay, nirodha means suffering can be ended. Okay, they can be ended. आप ये desires को overcome कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन क्या है? बाय फॉलोइंग द अष्टांग मार्ग. तो ये आप प्लीज याद कर लीजिए. एक तो दुख है, 4 नोबल ट्रूथ्स कहा जाता है इसे, और आर्य सत्यास कहा जाता है. सो इन दिस आर्य सत्यास बुद्धा इज ट्राइंग टू टेल यू दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. दुनिया में हर जगह सफरिंग है, सॉरो है, दुख है. वही दुखा, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुनिया में हर जगह दुख है. और वो दुख का कारण इंसान के जो डिजायर्स है, इंसान के जो क्रेविंग्स है. ओके, दोज आर द रीजंस. ओके, और योर क्रेविंग्स, योर डिजायर्स एंड योर अटैचमेंट्स आर द रीजंस फॉर योर सफरिंग. यू कैन गेट रिड ऑफ दिस सफरिंग एंड अटेन एनलाइटमेंट इफ यू फॉलो द अष्टांग मार्ग. ओके, सो दुखा, samudaya, nirodha and magga. So Buddha not only talks about the problems which is present in the world, he also provides a solution. What is the solution? The problem is the sorrow or the dukkha which is present in the world, and the solution is Ashtanga Marga, 8-fold paths. If you follow these 8-fold paths, you can get rid of this suffering and you can achieve enlightenment. So what are those 8-fold paths? These 8-fold paths, they are known as Ashtanga Marga. Ashtanga Marga. So in this 8-fold paths, we have right view, right intention or right determination. Then we have right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration and right mindfulness. So these are the 8-fold paths which a person has to follow if he wants to attain enlightenment. Okay, if he wants to attain enlightenment. Enlightenment is nothing but escaping from the cycle of dukkha.
okay, escaping from the cycle of worldly pleasures. And if you want to escape from this cycle, you have to follow this eightfold path. So what is right view? Right view means you should see all the sorrow which is present around you. आपके आसपास जो भी दुख मौजूद है उसे आप अच्छे से देखिए. उसके बाद राइट इंटेंशन और डिटर्मिनेशन. आप ये एक चीज डिटरमाइन कर लीजिए, ओके, प्लीज हैव दिस इंटेंशन ऑफ like escaping, you not only escaping your sorrow but even helping others to get rid of their sorrows. Okay, so that is about the right intentions. Okay, then we have right speech. Speak properly, have good talk. आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, आपको अच्छी बोली रखनी चाहिए. Okay, and then you should speak positive. Okay, you should speak positive. You should not have negative emotions or negative thoughts. You should not speak negatively about anything. You should speak positively. Okay, then we have right action. Right action include, you have to practice ahimsa. Okay, it talks about animal sacrifices. You should not practice animal sacrifices. Okay, you should practice ahimsa, and you should be very honest and truthful in what you are doing. आप जो भी कर रहे हैं आपको मतलब राइट पाथ ही फॉलो करने चाहिए. आपको अहिंसा प्रैक्टिस करना चाहिए और जो भी एनिमल सैक्रिफाइसेस है वो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करने चाहिए. ओके, देन वी हैव राइट लाइवलीहुड. ओके, सो योर द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, योर मीन्स ऑफ अर्निंग शुड बी ऑनेस्ट. ओके, योर मीन्स ऑफ अर्निंग शुड बी ऑनेस्ट, एंड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग you should not hurt anyone. Okay, then we have right effort. In right effort it talks about having self control. Okay, having self control, then controlling your evil thoughts and always encouraging positive thoughts in your mind. Okay, you should control your evil thoughts which are present in your mind, and always try to encourage positive thinking. That is about right effort. Then about right concentration, you should practice meditation. Okay, you should practice meditation and focus on things. Then right mindfulness, you should be mindful of what you are doing. Okay, जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि in the right mindfulness it also says that, see, everything which is present on the earth, it is temporary, nothing is permanent. Okay, nothing is permanent. So lead a life with mindfulness. Okay, with mindfulness you have to lead a life. So this was about the Ashtanga Marga. So what are those Ashtanga Marga? Right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration and right mindfulness. So Ashtanga Marga हमने देख लिया. तो हर जगह जब भी आप Ashtanga Marga 8 fold paths आप पढ़ रहे हैं उधर right mention किया गया है. Okay, it talks about being right. So right क्या है? So in Ashtanga Marga or 8 fold paths which Buddha has given, before every path he has given the word right. Okay, what is meant by right? Right means having a balance. Okay, you have to maintain a balance between luxury and austerity. Okay, एक लग्जरी और ऑस्टेरिटी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए. दैट मीन्स यू शुड नॉट फॉलो एक्सट्रीम पाथ. एक्सट्रीम ऑस्टर लाइफ भी आप आपको लीड नहीं करना चाहिए. मतलब जब भी हम बुद्धा ने एक पाथ दिया है, क्या है? अहिंसा. व्हेन बुद्धा इज टॉकिंग अबाउट अहिंसा, यू कैन नॉट प्रैक्टिस अहिंसा टू एन एक्सट्रीम extent. Okay, so ahimsa also you should practice in a right way. Okay, so right, the word right, it signifies that you have to maintain balance between luxury and austerity. You have to maintain balance between both. That means Buddha, the 8 fold paths, it emphasizes on madhyam marg. मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए. आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. सी, इन बुद्धिज्म, विल स्टडी अबाउट जैनिज्म इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. In Jainism and Buddhism, the most common idea is ahimsa. So ahimsa आपको जैनिज्म में भी दिखाई देती है और बुद्धिज्म में भी दिखाई देती है.
But the ahimsa which is practiced in Jainism, it is very extreme, okay? They talk about even like you should not hurt लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. आप ना ये चेयर को भी हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वो चेयर को हर्ट करेंगे तब भी आप हिंसा कर रहे हैं. यू शुड नॉट हर्ट इंसेक्ट्स, यू शुड नॉट हर्ट स्मॉल लाइक मस्किटोज एंड ऑल. तो इतने एक्सट्रीमली अहिंसा प्रैक्टिस की जाती है जैनिज्म में. बट व्हेन इट कम्स टू बुद्धिज्म, it is not that extreme. Ahimsa is practiced, but it is not that extreme, and that is what we are trying to tell here. All the paths which are given by Buddha, all the paths which are part of eightfold paths, you have to practice practice by maintaining a balance. Okay? That balance is given by the word right. Right action, right determination, right इंटेंशन, राइट व्यू. मतलब एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए लग्जरी और ऑस्टेरिटी के बीच में. दो एक्सट्रीम्स फॉलो नहीं करने चाहिए. यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, एंड दैट बैलेंस इज नोन एज मध्यम मार्ग. मध्यम मार्ग मीन्स मिडिल पाथ. Okay, Madhyam Marg talks about middle path, and it wants that the followers of Buddhism, they should maintain a middle path in all the margas which are given by Buddhism. So, Sammaditthi, right view, right resolve, Samma Sankappa. So, if you want, you can write it down, okay? Then we have right speech, right action. See, right view means understanding the nature of reality, especially the Four Noble Truths. So, you have to observe the Four Noble Truths which are present in your surroundings. Then right resolve or right intention means committing to harmlessness and compassion and non-attachment. Then we have right speech. Right speech means you should not have senseless speech. You should refrain from lying. You should speak only truth, and you should not behave harshly. Okay. Then we have right action. Right action means acting ethically by avoiding killing. See, ahimsa, stealing and sexual misconduct. That is about right action. Then we have right livelihood. Right livelihood means earning a living in a way that does not harm others. Then we have right effort. In right effort, we talk about cultivating positive state of mind and abandoning the negative ones. Then we have right mindfulness. Right mindfulness means maintaining awareness of the thoughts, feelings and actions in the present moment. Right concentration. Developing deep mental focus and meditative absorption. These practices are not meant to be followed sequentially, but rather developed simultaneously to foster inner peace and spiritual growth. These these paths, they help you in your spiritual growth, and they'll increase your inner peace. Okay, आपके inner peace. Okay, for your peacefulness and for your spiritual growth, these paths, they help you. And it is not necessary for you to follow these paths in this particular order only. Okay, you can follow them simultaneously also. So this was about the Buddhist teachings. For more updates, please follow our channel Pacific IAS, and if you find this video useful, please share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you very much.